Hello everyone, I am Ritika Zuzgar, Assistant Professor IT Department. So in the course of Artificial Intelligence, we started our Unit 2. So Unit 2 is based on problem solving, where we discuss about the beyond classical search technique. Okay, so in that we already discuss about the local search technique and optimization search technique. Okay, so local search techniques like hill climbing algorithm, simulating annealing, and the local beam search, and the optimization search technique is the genetic algorithm. Okay, so in previous video we already discussed this point related to the local search and optimization search technique. Okay, so second thing in the beyond classical search is the local search in the continuous space. Okay, local search in a continuous space. So the local search is conducted in the continuous space until the local optimum is reached. So if then switches to a discrete spaces that represent a discrimination of the continuous model to find an improved solution from there. So the process continues switching between the two problems formulations until no further improvement can be found in either. So to perform the local search in the continuous search state space, we need a techniques from the calculus. For that purpose, we are using some mathematical calculations to find out the local search in the continuous state spaces. So the main technique to find a minimum is called as a gradient descent. Okay, so gradient descent is used to minimize the most significant by calculating the gradient of the cost function. So the gradient measures how much the output of a function changes if you change the input a little bit. So as I said, if you are searching the local search in the continuous state space, so in that case हर टाइम हमारा जो भी इनपुट होगा वो क्या होगा, चेंज होगा. ओके, सो जितने टाइम्स हमारा इनपुट चेंज होगा उतने टाइम हमारा जो भी ऑप्टिमाइजेशन वैल्यू है वो हमारी चेंज होगी. ओके, सो इन द लोकल सर्च और इन द कंटिन्यूस स्पेस अंटिल द लोकल ऑप्टिमम इज रीच. ओके, कब तक हमें कंटिन्यूस चेक करना है उसको, जब तक हमें लोकल ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं मिलता. सो बाय यूजिंग द ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम वी कैन फाइंड आउट लोकल सर्चेस इन द कंटिन्यूस स्पेसेस. So gradient measures how much the output of a function changes if you change the inputs a little bit. So gradient simply measures the change in all the weights with the regard to the change in error values. So we can also think about the gradient as the slope of a function. The higher the gradient, the steeper the slope and the faster a model can learn. Okay, if the higher value of a gradient, then in that case we have a steeper the slope and the faster a model can learn. जितनी gradient की value ज़्यादा होगी. But if the slope is a 0, the model stops learning in the mathematical terms and the gradient is partial derivative with respect to its input. So what is a gradient actually? So in machine learning, the gradient is a derivation of a function that has more than one input variables, known as the slope of a function in the mathematical term. So the gradient simply measures the changes in all weights with regard to the change in error. So gradient descent is an optimization algorithm that is used when training a machine learning model, and it is based on a convex function and its parameter iteratively to minimize a given function to its local minimum. Gradient descent का aim क्या है? To find the local minimum by using the iterations. So gradient descent is an optimization algorithm to find a local minimum of a differentiable functions. So gradient descent is simply used in the machine learning to find the values of a function's parameters, which is also called as the coefficients that minimize the cost function as far as possible. So if we are using the gradient descent algorithm, we start by defining some initial parameters values, and from there gradient descent we can use the calculus iteratively
and adjust the values so that we can minimize the given cost function. So to understand the gradient descent concept, so it is important to know about the gradients. So before starting discussing about the gradient descent, first we discuss about some part of a linear regression, okay, which point we already discussed in a machine learning course, the linear regression part, okay. So here in the statistical, the linear regression is a linear approach to modeling the relationship between the dependent variable and one or more independent variables. So let us x is an independent variable, okay. So see here, the linear regression is a modeling the relationship between the dependent variables and one or more independent variables. That means independent variables is on x axis, okay, and the dependent variables on y axis. So जितने भी नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे वो हम यहाँ पे स्टोर करेंगे, प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, जो कि इनपुट जो भी हमारे इनपुट्स है वो क्या होंगे, वन और मोर इंडिपेंडेंट. मीन्स व्हाट, ग्रेडियंट हम कब यूज़ करते हैं, अगर हमारे इनपुट वैल्यूज़ चेंज हो रहे हैं कंटिन्यूसली. तो हमारा लोकल सर्च कैसे होगा, इन द कंटिन्यूस प्लेसेस, ओके. सो सी हियर, let x be the independent variables and y is the dependent variables. So we will define the linear relationship between these two variables like this, okay. So this is the equation for a line that we studied in a college life or a school life, okay, how to plot this type of graph, okay. So this is a part of a linear line plotting in the x and y axis. So where we are getting the equation like y is equal to mx plus c, okay. C is the y intercept, okay. M is the slope of a line, x is the x intercept and y is the y intercept, okay, y axis, sorry. So here m is the slope of the line and c is the y intercept, and we will use this equation to train our model with the given data set. So हमारे पास different data sets हो सकते हैं, okay. So अगर मैं x और y कोऑर्डिनेट अगर सेट करती हूँ तो मेरा यहाँ पे एक डेटा सेट हो सकता है, यहाँ पे एक डेटा सेट्स हो सकते हैं, यहाँ पे एक डेटा सेट है, ओके. मल्टीपल डेटा सेट्स प्लॉट किए हैं, यहाँ पे भी एक डेटा सेट होगा, यहाँ पे एक डेटा सेट होगा, okay. There are multiple data sets and again, so see here, some data set जो है वो ये लाइन से पास हो रहे, ये लाइन से हमारे some data points क्या हो रहे, पास हो रहे, okay. So this is a line of equation, okay. So the linear line of equation is what, y is equal to mx plus c, okay. So this is a linear equation. So we will use this equation to train our model with the given data set and predict the values of y for any given value of x. For any given value of x, we have to predict the value of y. So our challenge today is to determine the value of m and c also, such that the line corresponding to those values is the best fitting line or give the minimum error, okay. सो कैसे यहाँ पे हमें मिनिमम एरर मिलेगा, देखो ये वाला जो डेटा सेट है इसका एरर क्या होगा, मिनिमम होगा, इसका एरर मिनिमम होगा, इसका एरर 0 हो सकता है या फिर ये भी 0 हो सकता है, इसका भी 0 हो सकता है. बट देखो यहाँ पे डिफरेंस है, सो ये पॉजिटिव एरर देगा हमें क्योंकि लाइन ऑफ इंटरसेप्ट से ऊपर इसकी वैल्यू है, ओके, प्लॉट किया है. इसका मैक्सिमम एरर होगा जो कि पॉजिटिव में होगा. बट ये जो डेटा पॉइंट्स है इसका भी एरर होगा, ओके, क्योंकि जो भी हमने प्रेडिक्टेड लाइन है इससे क्या है हमारा बहुत सारा डिफरेंस है, इसको हम क्या बोलेंगे, एरर्स. ये भी हमारा एरर है जो कि निगेटिव में वैल्यू शो करेगा, ये भी एरर होगी जो हमें निगेटिव में शो करेगी वैल्यू, और ये भी हमारी एरर होगी जो कि निगेटिव वैल्यू में शो करेगी, ओके. सो वी हैव टू यूज दिस टाइप ऑफ लाइन of regression to minimize the error, okay. So this is the concept about the linear regression, okay. So see here, then we are going to discussing about the gradient descent algorithm. So gradient descent is an iterative optimization algorithm to find the minimum of a function. So here that the function is called as a loss function. So this is a simple diagram to diagram of how the gradient descent algorithm works, okay. So imagine a valley and a person with no sense of direction
who wants to get to the bottom of the valley. Okay, starting from this position, this person is moving downwards and the goal state is what here. The person with no sense of direction, उसको कोई भी डायरेक्शन नहीं पता है कि उसको कैसे गोल स्टेट पे के ऊपर वो रीच हो जाएगा. ओके, विद नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, with no sense of direction, the person wants to get to the bottom of the valley. So this person goes down the slope and take a last step when the slope is a steep and small step when the slope is a less steep. Okay, अगर कंटिन्यूसली मूव कर रहा है नीचे तो ये क्या करेगा, लास्ट स्टेप लेगा. ओके, क्योंकि ये डाउनवर्ड जा रहा है. ओके, बट यहाँ आने के बाद क्या है, स्लोप थोड़ा कम होते जा रहा है. सो ये क्या करेगा, स्टेप उसके कम करेगा. ओके, सो the person takes last step when the slope is steep and person small steps when the slope is a less steep. So he decides his next position based on his current position and stops when he gets to the bottom of the valley, which was his goal. Okay, to see here, so this is a first part and this is a सेकेंड पार्ट. सो यहाँ पे वो ज़्यादा मीन्स मूवमेंट जो भी उसका डिफरेंस होगा, ओके, स्टेप्स का वो ज़्यादा होगा, लास्ट स्टेप्स वो यूज़ करेगा. बट यहाँ पे आने के बाद वो अगर उसका गोल रीच हो रहा है यहाँ पे तो वो क्या करेगा, स्टेप्स उसके कम करेगा. सो स्टीप स्लोप वैल्यू डी इज़ अ हाई, सो टेक अ लास्ट स्टेप. स्लोप इज अ लेस स्टीप वैल्यू, डी इज़ अ लो, सो टेक अ स्मॉल स्टेप्स हियर. सो दिस इज़ अ सिंपल example of gradient descent algorithm. So what is the loss function here? So loss is the error in our predicted values of M and C. So the our goal is to minimize the error to obtain the most accurate value of M and C. Okay, so this is a line of slope and the C is here. Okay, and the M is equal to y is equal to mx plus c. Okay, तो सेम हमें क्या करना है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है इस टाइप का. सो दिस इज अ लाइन. सो मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट कब मिलेगा, जब हमें एम और सी के वैल्यूज फाइंड आउट हो गए. सो वी विल यूज द मीन स्क्वेयर्ड एरर दैट इज MSE फंक्शन टू कैलकुलेट द लॉस. ओके, वी यूज द MSE फंक्शन टू कैलकुलेट द लॉस. So first step is find the difference between the actual y and the predicted y values, that is y is equal to mx plus c for a given x. Then square these differences and find the mean of the square for every value in a x. So these are the three steps for finding the loss function. So see here, mean squared error function is what? E is equal to 1 divided by n, summation of I is equal to 0 to n, and yi minus yi bar. So yi is what? Over the difference between actual y and predicted y. So this is our actual y and this is our predicted y. Okay, actual y and the predicted y. So here actual y means what? See here, अगर मैं ये वाला एक डेटा पॉइंट कंसिडर करती हूँ, so इसके कोऑर्डिनेट होंगे x and y. ओके, सो ये वाला जो डेटा पॉइंट है इसकी x वैल्यू अगर 2 है मेरे पास यहाँ पे, और y की वैल्यू जो है वो है मेरे पास 1. ओके, एक डेटा पॉइंट के लिए. सो एक्चुअल y क्या होगी इसकी 1. ये तो सेम होगा. ओके, x वैल्यूज तो सेम होगी बट y की वैल्यू क्या है यहाँ पे इसकी 1 है. बट सो दिस इज कॉल्ड एज अ एक्चुअल वैल्यू. एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू हमने प्रेडिक्शन क्या किया, ये लाइन से हमने क्या किया, प्रेडिक्शन किया. इसलिए ये क्या हमारा प्रेडिक्शन वैल्यू. बट इसका x तो कॉन्स्टेंट है बट प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या है, इसकी प्रेडिक्टेड वैल्यू यहाँ पे अगर होती है तो प्रेडिक्टेड वैल्यू 2 तो एज इट इज होगा. एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू इज व्हाट हियर, इफ आई एम कंसिडरिंग 5. सो दिस इज अ प्रेडिक्शन. सो डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू 1 माइनस 5. ओके, होल स्क्वायर. सो इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे. सो हियर द फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल y एंड प्रेडिक्टेड y वैल्यूज फॉर अ गिवन x वैल्यू. x वैल्यूज तो कांस्टेंट होगी.
सो प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे हमने प्रेडिक्शन किया है उसका इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. सो वी हैव टू सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू हियर. 1 divided by n, summation of I is equal to 0 to n. Zero to n, summation of I is equal to 0 to n. yi तो as it is होगा, we have to substitute this yi value, that is mxi. ओके, सो हमारा प्रेडिक्शन वैल्यूज क्या है, ये हमने प्रेडिक्शन लाइन है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, yi का इक्वेशन होगा mxi प्लस सी होल स्क्वायर. ओके, देन we have to apply the gradient descent to the m and c and approach it step by step. So here yi is our actual value and yi bar is a predicted value, so we are substituting this value here. So we square the errors and find the mean. Hence the name mean square error. Now that we have defined the loss function, so by using minimizing, how to find out the loss function, by predicting the values of m and c. The next part is what, find out the values of m and c. So try to applying the gradient descent to m and c and approach it step by step. So step 1 is what, let consider initially m is equal to 0 and c is equal to 0. So let L be our learning rate. This control how much the value of m changes with each step. Okay, continuously हमारी m की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी. Okay, see here, अगर मेरा इनिशियली ये x है और ये y है तो m की वैल्यू ये होगी यहाँ पे, बट नेक्स्ट अगर मैं चेंज करती हूँ, ये अगर y की वैल्यू तो m की वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी. ओके, so like this. So this control how much the value of m changes with each step. So L could be a small value like 0.001 for good accuracy. जितनी learning rate की वैल्यू कम होगी उतनी accuracy हमें ज़्यादा मिलेगी. ओके, कीप रिमेंबर दिस पॉइंट, लर्निंग रेट जितनी कम होगा उसको हम अल्फ़ा लर्निंग रेट वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं. ओके, सो जितनी अल्फ़ा की वैल्यू हमारी कम उतनी गुड एक्यूरेसी हमें मिलेगी. So if the L could be a small value like 0.0001 for the good accuracy. If the value of L is high, then gradient descent won't reach to the minimum point. If the value of L is too small, then we take a lot of iterations to get to the accurate value. Step 2 is calculate the partial deviation of the loss function with respect to m and plug in the current values of x, y and m and c in to obtain the derivation value d. So here the mx plus c is predicted value of y bar. So dm is equal to 1 divided by n, summation of I is equal to 0 to n. So we have to use here the formula is yi minus mx plus c whole square. Okay, so 2 is here और डेरिवेशन यहाँ पे हमने यूज़ किया है. सो 1 डिवाइडेड बाय n. सो डेरिवेशन किसी कैसे होगा इसका, 2 इन ब्रैकेट yi वैल्यू इज एज इट इज माइनस mxi प्लस c एंड माइनस xi बिकॉज m and c आर दी कॉन्स्टेंट वैल्यूज. so derivation is for only minus xi and dm is equal to minus 2 by n. Okay, we are putting this value minus 2 over here, minus 2 divided by n, summation of I is equal to 0 to n xi in bracket yi minus yi bar. So this is the final equation for the derivation with respect to m. यहाँ पे हमने यूज़ किया है derivation with respect to m. So dm is the value of partial derivation with respect to m. And similarly, let's find the partial derivation with respect to c. So partial derivation with respect to c is what here. अगर यहाँ पे मैंने इसके लिए फाइंड आउट किया है तो partial derivation with respect to c is what,
is equal to minus 2 by n summation of I is equal to 0 ओके. देयर इज़ ओनली वन डिफरेंस. यहाँ पे पार्शियल डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू सी का हमें क्या करना है, एक्स आई यूज़ नहीं करना है, ओनली वाई आई माइनस वाई आई बार, बिकॉज सी क्या होता है हमारा वाई इंटरसेप्ट. ओके, सी इज़ वॉट ओवर हियर इन दिस डायग्राम, सी इज़ वॉट ओवर वाई इंटरसेप्ट. सो जो भी हमें सी के वैल्यूज़ होंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई मिलेंगे, नॉट फॉर एक्स. So there is only one difference between the value of derivation of m and derivation of with respect to c is instead of xi we can only use this point. Okay, dm के अंदर xi होगा but dc के अंदर xi की वैल्यू नहीं होगी. So the only difference between the partial derivation with respect to m and c is that dc does not have x item because c is a y intercept value. Then the step 3 is now we update the current value of m and c using the following equation. Okay, so m is what, m minus l into dm. Okay, so here the m value is m minus l is a learning rate into the dm value, and c is what, c minus l into dc. So here L is the learning rate, so as each update the accuracy increases and we get the closer to close our goal. Similar for the C also. So step 4 is we repeat this process until our loss function is very small value or ideally 0. So continuously हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा current m value 0 है माइनस learning rate हमने क्या कंसिडर किया है 0.0001 एंड डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एम एम, जो ये फॉर्मूला है उसकी जो भी वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे प्लेस करेंगे. सी की वैल्यू भी हमने इनिशियली 0 ली है, लर्निंग रेट वैल्यू ऐड करेंगे इनटू डी सी की वैल्यू ऐड करेंगे. सो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, न्यू एम की वैल्यू मिलेगी, न्यू एम की वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे न्यू सी की वैल्यू मिलेगी. सो इसको हम प्लॉट करेंगे. अगेन न्यू जो एम की वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे, फिर अगेन हमें न्यू एम और सी की वैल्यूज़ मिलेंगी. ओके, सो नाउ we repeat this process until our loss function is very small value or ideally 0, which means 0 or 100% accuracy. So the value of m and c that we are left with the now will be the optimal values. Okay, so see here the value of m and c are updated at each iteration to get the optimal solution. हर टाइम हमें एम और सी की वैल्यू चेंज कर रहे जब तक हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलता तब तक. ओके, सो हियर ओके इनिशियली हमारे पास कुछ इस तरह से डेटा सेट्स होगा, गोल स्टेट हमें कहाँ पे मिलेगी. सो इस तरह से हमने इसको प्लॉट किया है बाय चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ एम एंड सी. ओके, सो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, फर्स्ट विल टेक द डेटा एंड प्री प्रोसेसिंग इट, देन स्टेप 2 इज बिल्ड द मॉडल एंड स्टेप 3 इज मेक द प्रेडिक्शन. ओके, so by using m and c these are the optimal values, and by using this m and c our model is ready to make the predictions. So here m can be the considered as a current position of the person, d is equivalent to the steepness of the slope, and l can be the speed with which he moves, with the person is moves. Now the new value of m, that we calculate using this equation, and we will the next step is what, l into d. So we will be the size of the steps he will take. So when the slope is more steep, अगर slope अगर more steep है, so d is a more, okay, d की ज़्यादा वैल्यू ज़्यादा होगी, so you take a longer steps, and when it is a less step, that is a d is a less, then he take the small steps. So finally he arrives at the bottom of the valley, which correspond to the loss value is equal to 0. So in this
In this part, we can learn how the gradient descent algorithm works and implemented it from this diagram. So first we will look at the linear regression and then we define the loss function, and we learn how the gradient descent algorithm works, and finally we will be implemented it on the given data and make the predictions, given data set and make the predictions. So here the values of M and C are updated at each iteration to get the optimal solution. Okay. So this gradient descent is one of the simplest and widely used algorithm in machine learning or some AI technologies, and it is mainly because it can be applied to any functions to optimize it. So learning it, so we can learn this technique gradient descent for the machine learning also and the AI technologies also. Okay. So this is all about the gradient descent algorithm. Thank you.